My name is Paris Batra. I am a CA and a CPA. I am, applying for my license with Washington. So that is a work in progress, I would say. But yeah, I have qualified my tests, and back in 2000, I think 18, I qualified my CA. So I come from a diverse background of assurance, a background of international taxation, a background of corporate finance. I have worked with multinational organizations as well as Indian-based companies, be it like McKinsey and Company, be it like one of the popular firms in the South, which is Brahma and Company. I work with them, and I've learned a lot from the corporate background. But teaching is becoming a hobby, and it's becoming something that drives me. So I always try to invest my time in teaching and interact with students. So that's how I worship my study towards the society and the organization back. So that is my funda of teaching, and I always try to teach in a very casual way, in a very friendly way, ताकि मैं एक स्टूडेंट से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ. एंड द ब्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स इज दैट द स्टूडेंट्स कैन बी वे senior to me as well as junior to me. So that's the beauty. It's not about the age, it's about what we are doing and how well we interact with each other and how well we can help each other in the preparation of the overall course. All right, well, that being said, let's go on with BEC 1.3. When I say 1.3, I am talking about ERM. And ERM bole to, I hope whatever I'm writing on the top is crystal clear to you. Nothing is going out of the frame. Enterprise risk management. Okay. क्या कोई मुझे एक सेंस ऑफ आइडिया दे सकता है इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. क्या कोई थोड़ा सा आइडिया या मे बी कोई गेस वर्क कर सकता है यार, व्हाट आर वी अबाउट टू डू इन दिस चैप्टर? एंड माइंड यू, दिस इज वन ऑफ those chapters which is tested in that exam. In the last one and a half year, it is being frequently asked in the exam. I would say not like पूरा एग्जाम का 10-15% इससे आता है, no, but at least अगर पार्ट 1 आ रहा है तो this will become a promising contributor. तो पार्ट 1 लगभग 10 से 15% आता है, उसका मेजर कंट्रीब्यूटर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है. सो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से क्या एक वाइल्ड गेस आप मार पाते हो? व्हाट इज ERM ऑल अबाउट? व्हाट इज द वाइल्डेस्ट गेस यू कैन हैव? ओके, लेट्स कैच समवन एंड आस्क, व्हाट अबाउट योगेश? योगेश, व्हाट डू यू थिंक? यार ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है क्या? मुझे अगर प्राइमा फेसी कोई पूछेगा तो मैं ऐसे हाईलाइट करना चाहूंगा, एंटरप्राइज का रिस्क और उस रिस्क का मैनेजमेंट. Any guess, what is ERM all about? Any guess, Yogesh? Capabilities. Puneet says risk at organizational operational level. Puneet, I would say you are partially correct. It can be risk above the operational level. It can be risk on other aspects as well. But yeah, good step and a good direction that you took in that. Yogesh, I am not clear what do you mean by capabilities. If you could elaborate, would be totally helpful to me and the audience herein. Risk management strategies deployed by management to avoid
operational, financial, or business risk. That's a bang on answer. This is from Yashit. Thank you so much. That's very helpful. Yogesh says no idea, sir. All right, no worries. That's all right. Okay, so अगर मैं बहुत basic language में बोलूं, okay, just one thing came up. This is शमशील. And one more thing, अगर मैं किसी का नाम गलत pronunciate करता हूँ, please stop and tell me कि sir my name is pronunciated like this, not like that. So just give me the benefit of doubt. I'm not intentionally making fun of the name. Okay, this is Shamshil says oversee the company risk at across the operational, financial, and make process to control the company risk. Good attempt. Very nice. Puneet says strategies to mitigate risk at management level. I would say it's at the management level as well as on a lot of levels, but definitely very well put. Again, because enterprise risk management is not the duty of the board of directors, not the duty of equity shareholders, not the duty of other stakeholders like creditors, vendors, clients. No, it is the duty of the management of the company. All right, sounds like we are getting closer and closer onto this topic. Okay, अगर मैं बहुत easy language में बोलने की कोशिश करूं, just to keep it very simple, enterprise risk management is just what the words say. Enterprise means the organization as a whole. It doesn't mean the organization's operation function, control function, whatever other kind of function, HR function, maybe admin function. No, it means the enterprise as a whole and the risks around those functions. So we are taking care of the enterprise as a whole and the risk on all around those functions and managing those risks. Can somebody tell me, basis whatever they have studied so far, risk is inevitable or not? Risk तो हो सकता है बिल्कुल या नहीं? क्या कोई मुझे ये कह सकता है सर रिस्क 100% जीरो पे ला सकता हूं मैं? आई एम रिस्क प्रूफ. कोई ऐसा कह सकता है? सर इट विल बी देयर. व्हाई इट विल बी देयर? एनपीयू. एनपीयू में भी रिस्क होता है. देयर आर. अच्छा नो लिख रहे थे आप. ओके, ऑलराइट शमशील. It's very simple. Even the smallest and the minutest factors have risk. I am taking a class virtually. The risk is that the power can go off. And how are we managing that risk? We are keeping a power backup. You know what? The board can go down. What are we doing is we are keeping a backup support system. The IT can fail. What we are doing is we are keeping a backup of IT. Of course, we try to fix it at our level first, but if not, we have a IT backup who can help us and get it done at the same time. What is the risk? The risk that we may not be able to deliver the lecture to you. And how and what we are doing is, as Edumont, we are having enterprise risk management. We are managing our risk. There can be a risk that the faculty is not being able to reach to the spot where the studio is. So what we have to do is to make sure they are leaving in time from their place and reaching in time so that they can take class on a timely manner. There can be a risk that we are processing incorrect payments. In the sense, मैं एक फैकल्टी हूं, एक मिस्टर बी फैकल्टी हैं और मिस्टर सी फैकल्टी हैं. मुझे तीनों की पेमेंट मुझे ही मिल जाती है. That can be an error. That can be administrative or a HR risk. So how we are managing? We are keeping the control functions. We are keeping review functions. Monitoring is going on so that we don't do risk. Let the risk overrule us. Okay, let's go on. ये था बहुत ग्राउंड लेवल पे एक आइडिया लेने का. अगर हम एक ग्राउंड लेवल बिल्ड कर लेंगे
Simple chapter, nothing else. It's just talks, and enterprise risk management is done. Okay. तो अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज लिखता हूं, ERM is defined as the culture, the capabilities, and practices which is integrated with strategy, setting, and its performance. मतलब यार मैं ओवरऑल अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे तो चलना चाहता हूं. I want to maintain the culture, the capabilities, the practices, the integratedness overall with the strategy, setting and its performance. यार कि मैं जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं कि मैं अपना काम, अपना रिस्क मैनेज कर पाऊं, मैं उसके लिए करूंगा ही करूंगा. All right, it is important to align our strategy, our enterprise risk management strategy to the strategy of the business. अगर ये aligned नहीं है, अगर ये risk management और strategy aligned नहीं है, कैसे manage होगा? अगर ये misaligned है, I can't do anything. It will be ineffective. So my organizational objective may not be achieved. Okay. If you remember, I just gave a brief introduction and मैंने एक चीज बोली थी, enterprise risk management. Enterprise risk management is taken up and taken care by whom? It is taken care by the board of directors, equity shareholders, vendors, creditors, lenders, clients. No. It is taken up and taken care by the management. मतलब, though the board has an oversight role, but the actual responsibility of enterprise risk management lies with the management. Okay? That sounds good. आगे चलते हैं. Sir, there are few facts about enterprise risk management. हम उस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. And let's get to know what are the facts around enterprise risk management. Let me know if you agree or disagree. And remember one thing, there is no harm to disagree. Okay? अगर लगता है अरे नहीं यार ये नहीं है, इसका मतलब तो ये है, या एटलीस्ट मेरी बेस्ट और करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका मतलब कुछ और है. सो वी मे नॉट हेजिटेट टू डिसएग्री and we should be proud of what we think, because at least we need to clarify if we are correct or not. Okay, let's go on. The first fact relating to enterprise risk management is that ERM or enterprise risk management is not a function or a department. सर जैसे फाइनेंस फंक्शन होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, एडमिन फंक्शन होता है, आईटी का डिपार्टमेंट होता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का कोई फंक्शन, कोई डिपार्टमेंट नहीं है. इट इज अबव दैट. इट इज not limited to a function. It is not limited to a department. It's an overall culture, capability, practice that we have over the enterprise risk management. I hope we are on the same page until here and there is no confusion with the fact. शायद
ऐसा बोला जाए ERM is a function or a department, but in reality it is not. Okay, let's go on. ERM is not, or I can say is more than risk listing. सर ये तो इसके नाम से ही समझ आ जाता है. It is not enterprise risk. You know, noting or enterprise risk, identification or analysis. It is enterprise risk management. मतलब I am just not, you know, doing the listing part. कि मैं लिस्ट डाउन करके मैनेजमेंट को पकड़ा नहीं रहा कि ये आपकी एंटरप्राइज रिस्क है, देख लो जो करना है कर लो. नो, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट टू मैनेज इट, टू डील विद इट, टू कम विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आउट ऑफ इट. ERM is more than internal control. It is not an internal control function, but of course it overlaps few aspects of internal control. मतलब मैं रिस्क को मैनेज कर रहा हूं, but it doesn't mean ये सिर्फ internal control है. It is a way above terminology. इसमें बहुत सारे aspects हैं. रिस्क को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, मैनेज करो, मिटिगेट करो. ऑफ कोर्स कंट्रोल्स में भी सिमिलर कुछ होता है, बट ये सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्रूव नहीं करता, ये एंटरप्राइज को रेडी करता है कि एक्सटर्नल रिस्क से कैसे डील कर सकता है. राइट? डज दैट मेक सेंस? क्या अभी तक के फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियर हैं? आर वी ऑन द सेम पेज? कमल, योगेश, आर वी गुड? पुनीत, कौन कौन है क्लास में देखें. स्वाति, आर वी गुड हियर? राज गुप्ता, आर वी गुड? पूजा, जोएल एस थॉमस, आर वी गुड? अपर्णा, आर वी गुड? पुष्प, मितुषी, संतोष, सचेत, आर वी गुड गाइज? लुक्स गुड. चलो आगे चलते हैं. अरे एक बात बताओ, ERM हम बोले जा रहे हैं, क्या ये एक टाइप की चेकलिस्ट है? अरे ये हो गया, इसको टिक कर, ये हो गया, इसको भी टिक कर, ये हो गया, इसको भी टिक कर. Is it like that? No, it's not a checklist that we have to do. It's a constant process that we work on. It's a constant management process. So ERM is not a checklist. आगे चलते हैं. And the next one is ERM. I'm just taking your doubt, Shamshil, after this point. ERM can be used by organization of any size, छोटी बड़ी माड़ी मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप कर सकते हो यूटिलाइजेशन. Any style of organization, any structure of organization, any size of organization, छोटी बड़ी कॉम्प्लेक्स इजी whatever, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क आता है और हर ऑर्गेनाइजेशन ERM को यूज कर सकता है. Auditors don't exactly evaluate the function of ERM, but if you remember or if you know, and if you don't know, I'm telling you, what happens is the management gives a representation letter which is called MRL, management representation letter. इंडिया में ऐसे 580 कहते हैं उसे, 580. बाहर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में 580 के नाम से ही आता है. तो उसमें वी आर गिविंग अ रिप्रेजेंटेशन दैट यू नो द मैनेजमेंट टेल्स दैट हमने सारा काम करा है, हमने इंश्योर करने की कोशिश की है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड, कोई रिस्क वगैरह नहीं है. वी हैव प्लेस्ड आवर ओन चेक्स, वी हैव प्लेस्ड आवर ओन जजमेंट्स.
So our judgments and checks are ERM. It is not only a checklist. It is not only risk listing. It is way more than that, right? And it can be applied to any organization of any size. Okay, ERM is managed by internal body or external body like auditors. I think I have addressed a question by Shamshil as well as Puneet. Let me know if you have any query around that. If not, we can go on. Let me know, guys. Puneet and Shamshil, are we good? Okay, Puneet says we are good to go. What about Shamshil? Shamshil, are we good to go? And what about others? Are we good to go? Because we are done with this, let's jump on to benefits of ERM. अभी तक हमने ये जाने कुछ misconceptions थी, तो we had facts. Just to clarify, can this come? I would say it can come like a MCQ. Pick the correct statement. ERM is not a checklist. ERM is more than internal controls. ERM can be applied or used on any organization of any size, any structure. I want to understand about my queries. Your query was that ERM is managed by internal body or external body like auditors, any other. I had mentioned earlier as well when I was addressing Puneet and your question jointly. I had mentioned that it's not taken up by the auditors, it is taken up by the entity, the management. ये हमें पता है, and the management takes care of everything. But the management gives a written representation to the auditors कि देखो हमने ये सारा मैनेजमेंट का रिस्क को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, उसको मिटिगेट करने का काम कर रखा है. There is no statutory requirement exactly, but it is a inevitable process. क्योंकि अगर आप बिजनेस रन करोगे तो आएगा रिस्क, और रिस्क है तो इश्क है नहीं, ये टीवी की लाइनें नहीं लगानी यहां. रिस्क है तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है. स्टूडेंट्स को लगा अरे ये हर्षद मेहता की लाइनें क्यों आ रही है यहाँ पे. ओ माय गॉड. ओके, it is like internal auditors who doing audit and companies applied for IFC. I would say it's not exactly an internal audit, but of course the management can use the function of internal auditors to do their work because they can hire an internal auditor. But a lot of managements are who don't hire an internal auditor and they have their in-house team well prepared, well versed. They get the job done by them. It totally depends. Internal audit की compliance है भी या नहीं. अगर नहीं है तो it's still my choice. I can do the risk management without having the internal auditor. Even I can hire an internal auditor and do the risk management. That's my call. So, as we said, management takes care of the risk management, enterprise risk management. I hope we are good. Shamshil has given a heads up, looks good. Puneet has given a heads up, looks good. How about others? क्या बाकी सब भी सही हैं? Can we go on? What about Swati, Yashit, Yogesh, Kamal? All right, let's go on. एक बात बताओ, अभी तक तो हमने सिर्फ ये क्लैरिफाई करा कि क्या ऐसे फैक्ट्स हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो कि थोड़ी मिसकंसेप्शंस में लॉस्ट हो जाते हैं, तो हमें क्लियर हो गया. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ ERM. यार कोई बेनिफिट तो होगा ही होगा, नहीं तो कौन ERM अप्लाई करना चाहेगा. किसको क्या पड़ी है एक इतना प्रोसेस को अप्लाई करने की, क्यों कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहेगा, क्योंकि बेनिफिट्स आर वे मोर देन द एफर्ट्स. So it gives us an increasing range of opportunities.
ठीक है. It helps us to identifying and manage risk. Is this word completely visible? Entity जो मैंने लिखा है क्या आपको पूरा दिख रहा है? Entity level पूरा दिख रहा है? Yes. Okay, let's go on then. The third is, increasing the positive outcomes. बहुत बेसिक टाइटल है और काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंटर्स हैं ये कि यार एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को ला रहे हैं तो उससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं और क्या क्या चीजें आ रही हैं. So I'm just going on. But if you feel that I need some explanation here and there, way more than happy to help it. Way more than happy to address it. यार कोई सरप्राइज नहीं आएगा, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे एंड एडवांटेजेस है ये हमारे लिए ओवरऑल. Reducing performance variability. Any doubts until the first 4 pointers? Any doubt? मेरे को नहीं लग रहा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बोल सकते हो आप. अगर नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट इट. बट आई फेल्ट दीज आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. पढ़ के ही समझ आ जाता है क्या बात हो रही है क्योंकि हमने इतना बेस बिल्ड कर लिया है ईआरएम के आसपास. नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, टेल मी. लग रहा है हाँ ठीक है सर, समझ आ रहा है, लेट्स गो ऑन, इट्स ओके, नो कंफ्यूजन. Let me know. Let's go on, sir. Okay, all right. So I'm just erasing the first 2 pointers just to add the other ones. Fifth one is improving resource deployment. मतलब अरे एक एंटिटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अगर हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करेंगे हमें पता होगा अपने रिसोर्सेज कहाँ कहाँ डिप्लॉय करने हैं. ये तो स्टेप लग रहा है डांस का, हाँ ये स्टेप भी है, बट या दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल टू डिप्लॉय रिसोर्सेज overall on the organization, right? And we don't exhaust our resources, we use them in an efficient manner, and thus improving the resource deployment and enhancing enterprise. ये मेरा फेवरेट पॉइंट है तो इसमें आपसे पूछूंगा. It says improving or enhancing enterprise resilience. क्या कोई मुझे ये बता सकता है resilience होता क्या है? ये किस बला का नाम है? What is resilience? Or people say you are resilient. What does that mean? Ability to survive, adapt to changes. That's a bang on. Good job, Yashit. Thank you so much. I can say it is the ability of the organization or any individual to, deal with the challenge and bounce back. Easy language. But yeah, it's totally correctly put. Ability to survive, adapt to changes. I am resilient. मैं चेंजिंग इश्यूज के साथ साथ चेंज हो जाता हूं और
एक एक आंसर बैक कर पाता हूं. We all were resilient during COVID. We had challenges and challenges on and on, but we all managed our way out. That sounds good. Okay. मुझे पता भी नहीं था मैं resilient हूँ. Oh, nice. Okay. Are we good with the benefits of ERM? Are we good till here? Guys, what about Mitushi? Mitushi, are we good? What about Joel? What about Aparna? What about Raj? What about Yashit, Yogesh, Swati, Santosh? Are we good, guys? आगे चलें. Let's go on, sir. Let's go on. Chalo, chalo, chalo. Let's go on. Chalo. The next item for discussion is we'll just quickly discuss on few aspects of ERM and try to understand. अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा तो वैसा हो सकता है. Let's get going. We know one thing. Enterprise risk management is all about selecting a strategy for the organization. So I can say it's all about strategy and selecting a suitable strategy. So it's a strategy selection कि ऐसी कौन सी strategy follow करूं कि मैं एक अच्छा result निकाल पाऊं. And there can be a possibility or there can be a risk that my strategy is not aligned to the enterprise risk management I'm applying. Other way around, that the enterprise risk management I'm applying is not matching to my overall organization strategy. इसका एक डायग्राम मैंने बनाया था, मतलब डायग्राम क्या पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दी थी. ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी है, ये मेरा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का थॉट है. अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे और अप्लाई करूं तो आई कैन अचीव द फैक्टर ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. बट if I have an organization strategy different and the strategy I selected for enterprise risk management is actually not overlapping, maybe it's overlapping partially, I may be able to achieve but not 100%, और minimum तक नहीं जा पाऊंगा, शायद वो ओवरलैप ही ना कर रहे हो. मतलब अगर वो ओवरलैप ही नहीं कर रहे तो इट डजंट इवन मैटर, आपके एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट्स वर नॉट इफेक्टिव इनफ टू मैच द एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी. और जो हमने स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करी एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की वो वेल इनफ नहीं थी. डज दैट मेक सेंस? आर वी गुड? आर वी गुड टिल हियर guys? Are we good? इसमें और कुछ नहीं है. That's it about enterprise strategy selection and enterprise risk management strategy. आगे चलें. Okay, let's go on. We have a topic called components of ERM. But before we do this, क्या आपको याद है components of internal controls? यही वर्ड था शायद. Just give me a moment. Components of internal control. क्या आपको याद है components of internal control? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? अभी भी याद नहीं आ रहा. अरे दिस इज कंट्रोल एनवायरनमेंट. दिस इज रिस्क असेसमेंट.
This is A. बोले तो control activities. Monitoring. ओ हाँ, अब याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है. And T was what? अच्छा, that's it. चलो, what I was trying to put is, हमने जो cram it पढ़ा, we talked about control environment, risk assessment, information and communication, other control activities. ये सारे थे components of IC as per COSO. COSO हमने पढ़ रखा है, but हाँ, I can say it's a framework जिसके basis पे हम पूरा controls carry करते हैं. Similarly, enterprise risk management के भी components हैं, तो इसको हटाते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं. Just give me a moment, please. This is urgent one. Hello. हाँ, एक मिनट. Two 101034 1034. Okay. All right. Thank you for bearing with me. This is to talk about enterprise risk management और उसके components. What if I tell you, अरे जो आपने पढ़ा था ना, cram it, that's the same. Just scram it. Oh, मतलब that was helpful to figure out हम similar कुछ पढ़ने वाले हैं, और it's just cram it plus a s. Scram it is something we are about to do. ठीक है यार, एक बात बताओ, क्या ये भी कोसो का है? Yes. So similar to enterprise, internal control के components as issued by COSO. Scram it, which are the components of enterprise risk management, is also by COSO. It has 5 components. All right, sounds good. And I think the right way to write this will be S a cap, because this is a word, CRAM. Then we have a big I and a small t. Scram it. आगे चलते हैं. ठीक है, just giving you a very high level brief, so I want everyone to be on page 35. मैं एक पेज से आपका पूरा बेस बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद हम one by one इसको खत्म करेंगे. And I think with this the enterprise risk management is over. कुछ रह गया होगा, we'll look out. Okay, I am hoping you are on page 35. Let me know in the chat box, give it a thumbs up or say, okay, we are ready, something like that, so that we can go on. Okay, Swati gives a thumbs up. Raj says a yes. Okay, Yogesh says a yes. ठीक है, I think at least the audience is coming with the flow, और हम साथ साथ चल पा रहे हैं. ठीक है, चलते हैं. सर, जो C है of scram it, उस पे चलते हैं. So C बोले तो culture and governance. Oh, which means I have a culture, have a governance, somewhat relatable to control environment. But yes, here we are not talking about the only aspect of control. We are talking about the overall, aspect of the culture and governance. If you look at the table on 35,
this, just give you a brief idea of what they are talking about. Exercise board risk oversight, establishes operating structures, define desired culture. Oh nice, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, ओवरसाइट भी करते हैं. They demonstrate commitment to the core values, attract, develop and retains capable individuals. Oh nice. एक बात बताओ, क्या हमें एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाएगा? नो. बट वो ये देखना चाहते हैं, आर वी मेंटली अवेयर, what does culture and governance mean? Is it very restricted to control environment? No, it's wider term. It has wider aspects, wider understanding. That makes sense. Sounds good. That makes sense. Okay. And अगर मैं इसके बारे में ये बोलूं कि अगर आप कल्चर एंड गवर्नेंस को समझो, यू आर कैप्चरिंग वन कंपोनेंट ऑफ द ERM. मैनेजमेंट हैज टू डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टुवर्ड्स इट, नहीं तो कैसे समझेंगे एम्प्लॉइज? ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज R, which is risk management and performance. बुक में होगा risk and performance, but just to keep it very streamlined, I would say risk management and performance. Easier way, risk manage करना which can lead to performance. Risk management leading to performance. अगर मैं risk manage करता हूँ, I can lead to performance. What can be the overview of this? It is simple, sir. ये is a hot question in exams sometimes. So, feel free to, give a good thought and a good read to it. It says, identify the risk, assess the severity of the risk, prioritize risk, implement responses, and develop a risk portfolio view. अरे, don't hesitate. हम ये पढ़ के नहीं कह देंगे खत्म हो गया. We'll do this in detail, but I'm just trying to build a foundation before we go on to build our structure on this topic. Okay? रिस्क को कैसे डील करते हैं, उसके लिए एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या कर रहा है? What we are doing is we are having risk management which will lead to performance. Risk management leading to performance or risk and performance. What my job will be, I'll be first of all identify the risk. यार overall organization में कितने risk चल रहे हैं? Let me identify. This is one risk. This is the other risk. This is one more risk. And you are also, okay, यहाँ कैमरा है. You are also a risk. अच्छा, हाँ. Just for fun, ठीक है? तो we have risk. And हमने identify करा. अब हम assess करेंगे. अरे ये रिस्क की सिवियरिटी कितनी है, इस रिस्क की सिवियरिटी कितनी है, इस रिस्क की सिवियरिटी कितनी है, अरे ये तो रिस्क सिवियर ही नहीं है, छोड़ो. विल असेस द सिवियरिटी ऑफ द रिस्क एंड फिगर आउट क्या जरूरी है. देन आई विल प्रायोरिटाइज. अरे इस रिस्क को तो भूल जाओ, इसके बस का नहीं है कुछ, ये कुछ नहीं कर पाएगा. इस रिस्क की सिवियरिटी ज्यादा है, इस पे एफर्ट करने. इस रिस्क की सिवियरिटी अच्छी है, इस पे भी एफर्ट करने. ओके ओके. एंड देन वी हैव I'll implement my responses. अब मैं इस रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या क्या कर रहा हूं, और इस रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या कर रहा हूं. What am I actually doing to manage those risks which have high severity, which have been prioritized by me on a, on a priority basis. I'm dealing with them because they can affect my business immediately and have a bad impact to my business. All right, let's go on. And then once I implement my responses, then I will develop a risk portfolio view. यार अब इतनी मेहनत करी है, I'll have a view of the risk कि यार अब कैसे चल रहा है, क्या वो रिस्क कभी भी है, क्या ये रिस्क कभी भी है. I'm creating a portfolio view of my risks and look out what can be done about it. Okay, that sounds good. ठीक है. Let me know एक brief
आइडिया मिला क्या होगा इसके अंदर, इन द कल्चर एंड गवर्नेंस क्या होगा रिस्क एंड परफॉर्मेंस में? लेट मी नो. Swati, let me know, are we good? Yogesh, let me know. Puneet, let me know. Kamal, Joel, let me know, guys. Shamshil, let me know, man. Are we good till here? Yes. अरे सर एकदम मक्खन, सब समझ आ रहा है. चलो चलते हैं आगे. Okay, then we have information and communication reporting. मतलब हम वहां पे भी करते थे, हमने क्रैमिट में भी करा है. यार एक बात बताओ, आप कंट्रोल्स प्लेस इन कर रहे हो, आप कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स एक कंपोनेंट होगा, कैसे आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दे पा रहे हो, राइट? Similarly, we have a function here, or I would say a component here, which is information, communication, and reporting. Puneet says, what do we mean by prioritize risk on the basis of materiality? I would say yes. जब मैंने assess करा severity of the risk, मैंने देखा कौन सा रिस्क ज्यादा severe है, कौन सा रिस्क मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा हिट कर सकता है, then I'll give a response to that risk. So I set it a priority कि यार इसको priority 1 पे डाल, priority 2, priority whatever number. Does that make sense? Okay, चलो अब हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. इट सेज लेवरेज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. आईटी का यूज करो ताकि आप लेवरेज कर पाओ अपनी कम्युनिकेशन को. Communicate risk information, reports on risk, culture and performance. I'll give you a very easy example. आप मानो जब पहले इंटरनेट नहीं होता था, ग्लोबली जब मीटिंग्स होती थी वो इन पर्सन होती थी, समिट्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इंडिया से लोग बाहर जाते थे, बाहर के लोग इंडिया आते थे, वॉट एवर यू नो द लोकेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, बट ऐसा होता था. और इसमें क्या होता था, लोग दूर दूर से आते थे, मीटिंग्स अटेंड करते थे, समझते थे और फिर वो अपने देश में जाके बताते थे ऐसे करो ऐसे करो. दैट्स समथिंग अ ग्लोबल फिनोमेना इज गोइंग ऑन एंड वी शुड आल्सो अबाइड टू इट. बट इस सब में टाइम, ड्यूरेशन और हिंड्रेंस का चांस ज्यादा है. शायद मैं वहां 10 चीजें नोट नहीं कर पाया, मैंने 8 करी और मैंने 8 को बताया, 8 बताई, उनको समझ 6 आई तो उन्होंने 6 समझी, उन्होंने अपने जूनियर स्टाफ को बताया, तो वो फिल्टर आउट होते होते कम हो गई. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल वर एबल टू कम्युनिकेट इन अ वे बेटर मैनर. काफी अच्छे से और काफी इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट कर पाए अपने इश्यूज को, अपने सॉल्यूशंस को. एंड इफ यू आर गिविंग अ थॉरो थिंग, you are having a good control. If you're giving playback facility, you're having a good control. अरे ये तो हमारी एड्यूमॉन्ट क्लासेस में भी है. Yes, we can play back our recorded sessions. आज का सेशन भी रिकॉर्ड होगा. अगर आपको मेरे डांस मूव्स देखने का मन करे, so you can jump on to 1.3 और फिर से देख लो. That's nice. ठीक है, आगे चलते हैं. Sir, it says monitoring, which is all about review, which is all about revision. Oh, हम उधर भी तो मॉनिटर करते थे. मैंने कब मना करा? We were doing cram it. Now we are doing cram it. तो M तो आ ही रहा है, मतलब मॉनिटरिंग वहां भी थी और यहाँ पे भी है. We'll monitor कि यार सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए. We'll do the revisions if required. We'll review all on what is going. Assess substantial change, reviews risk and performance, pursue improvement in ERM. ये तो cool है. आगे चलते हैं. सर अगला आइटम कहीं पे भी नहीं है, ये हमें करना है. It says enterprise strategy and objective setting. And this is something which is the S of Scrum it.
यार इसमें क्या होता है? What is enterprise strategy and objective setting? हमने कहीं ना कहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था कि एंटरप्राइज की स्ट्रैटेजी होती है और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की भी स्ट्रैटेजी होती है। हमें इन दोनों को ओवरलैप करना है। अगर हम इसको ओवरलैप नहीं करेंगे तो हमारा हमारा ओवरलैप नहीं माना जाएगा और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा ऑफ द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, विच मीन्स अगर हम एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव सेटिंग अच्छे से नहीं करेंगे, इफ वी आर नॉट हैविंग द करेक्ट एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी एंड करेक्ट objective setting, we may not be able to have the enterprise risk management. It means if I am not having the selection of the correct strategy, not able to figure out what is the correct objective of my enterprise, then I may not be able to deliver what is actually required. It says analyzes business context, define risk appetite, okay, evaluate alternative strategies and formulate a business objective. Step by step है, let's discuss एक छोटे नोट पे. First of all, you will analyze what's the business context. यार अपना business है क्या? What all do we have in the business? Let me understand the business first. Figure out what all we are exposed to. Let me see how much risk I can bear. So I'll develop a risk appetite. मतलब छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू risk I can meet and manage the small risks. But if there is something above my risk appetite, I have to define it. So this suppose is my risk appetite. Anything above this is something crucial, serious, a matter of concern, and thus I have to work around it. All right. Then I will evaluate the alternative strategies. यार इसको मीट करने के लिए मैं रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी सेट कर रहा हूं। मैंने 4 स्ट्रैटेजीज बनाई, 1 2 3 4. I'll evaluate all these 4 strategies, try to figure out what can be the correct one, right? Then if I am able to evaluate and figure out among those alternative strategies, what I'll do is I'll formulate my business objective. I will formulate my business objective. I will have a clear objective. I have to follow this, I have to do that, and I have to do this and that, and that's how I will achieve my enterprise risk management. Are we good till here? क्या मेरी ऑडियंस को ये समझ आया कि ये ओवरऑल कंपोनेंट्स क्या हैं, इनका क्या महत्व है और कैसे ये बहुत आसान है? हाउ इजी दे आर इफ यू जस्ट नो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. आर वी गुड टिल हियर गाइस? लेट मी नो. All good, all good. What about Aparna? What about Joel? What about Kamal? What about Mitushi, Pooja, Sachet, Swati, Santosh? What about यशित? यशित ने लिखा है, अरे मैंने पहले ही लिख दिया यार, मेरा नाम ले रहे हो यार, गलत बात है. योगेश कह रहे हैं मैंने भी लिख दिया था यार, ये तो बहुत ही गलत बात है. सब कह रहे हैं looks good, we are good with it. Okay, let's take 2 minutes break. Let me grab some water. आप भी पानी वानी लो and let's get back and do this in detail and we'll try to pack it up. Okay, see you in 2 minutes. All right, my whiteboard is loading, but let it be, let it load, and we can still go on with the topic.
Let's talk about culture and governance in slight more detail. Understand करते हैं क्या क्या आने वाला है, क्या क्या relevant है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा. देखो, culture and governance together forms a basis of the organization. उसका मतलब होता है यार कि ओवरऑल मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कैसे करेगी. इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन द टर्न एट द टॉप. मतलब टॉप मैनेजमेंट का कल्चर क्या है, गवर्नेंस क्या है, उनके बेसिस पे मैं डिटरमिन कर पाऊंगा यार एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है. सो दैट्स द मोस्ट important thing. Culture and governance. ठीक है. It's always based on the turn in the top. So I can say base is the turn at the top. मतलब top management कैसी है, उनका क्या आउटलुक है, राइट. क्या वो एक्सरसाइज करते हैं रिस्क ओवरसाइट, क्या वो देख रहे हैं कैसे एक रिस्क ओवरसाइट है, उन आइटम्स के बारे में उनका क्या सोच विचार है. It also determines what kind of risk culture we are wanting to adapt and apply. So what is the risk culture we want? Are we risk averse, or are we neutral, or are we risk aggressive? Any thoughts? रिस्क एग्रेसिव का मतलब क्या है? एग्रेसिव रिस्क उठाने का जज्बा. मतलब सर आई एम विलिंग टू टेक हायर रिस्क फॉर माय बिजनेस. मे बी आई एम इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक्स, मे बी आई एम इन द बिजनेस ऑफ hedging, आई एम इन द बिजनेस ऑफ करेंसीज. इट कैन हैव हायर रिस्क, right? Maybe I'm in the business of narcotics, I sell drugs and all that. It's not a legitimate one, but yes, it's a risk aggressive business. You are willing to take higher risk. In the stock market, you're willing to take higher risk, future in options, high risk, high stakes, high profits. What about neutral? सर एक बिजनेस है, न्यूट्रल चलता है, अगर रिस्क होता है उसको हेज कर लेता है. इट्स बेसिस द न्यूट्रल वन. रेगुलर बिजनेस. सर रिस्क एवर्स. रिस्क एवर्स का मतलब क्या है? एवर्स मतलब हम बहुत 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 ज्यादा कंसर्न और केयरफुल होकर चलते हैं, क्योंकि अगर एक गलती करी बिजनेस बैठ सकता है. सपोज आई हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. मेरी एक गलती की वजह से मेरा प्लांट फट सकता है. द प्लांट कैन बी ब्लास्टेड. So what do you think? Will I be willing to take high risk? No, I won't. Maybe if I breach some agreement, the government can cancel my license and make my power plant go shut off. Man, बंद करो इस plant को, कुछ नहीं होगा. I have experienced, audit of power plants. I have, experienced power plants, solar manufacturing plants, hydro plants. I have audited everything like that. And what I would tell you is they are of huge size. 150 acres easy, 100 acres easy, 300 acres easy. इतनी दूर दूर ऑयल रिफाइनरीज को यूज करते हैं, वहां से यहाँ आता है. फ्यूल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. They are using sun to generate electricity. They have spare parts and spare parts. They have nuclear reactors, nuclear plants. So nuclear reactors are very, very risk taking items, and you are very risk averse. You don't want कि कुछ गलत हो जाए, because अगर कुछ गलत हुआ पूरा प्लांट oh my god. So they are very, very cautious, very, very concerned for their business. Okay. And it demonstrates what are the core values of my organization. The organization demonstrate the commitment to the business they make. अगर सपोज करो मेरी सीनियर मैनेजमेंट ही रात को जाती है और सुबह जब मन करता है ऑफिस आती है, मतलब दे कम टू द ऑफिस एट 4 o'clock. What do you think? The leadership is preparing that culture. क्या वो आगे भी ऐसा चलेगा? तो वो डाउन फ्लो भी ऐसा होगा. So you have to actually demonstrate commitment.
you have to demonstrate responsibility, you have to demonstrate that you're dependable, and that's how your organization will perform and how they will deal and respond to risks. आपने कहीं देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस के हमेशा कहीं मे बी वॉलपेपर में, रिसेप्शन में या मेल्स के नीचे कोर वैल्यूज लिखते हैं, just to demonstrate these are our core values. We have to work around them, we don't have to compromise any of it. Point one, bases the top. Point one, I am not sure which is point one for you. Organizations turn. I think if you have done, that culture and governance, you have understood turn at the top. Turn at the top means the leaders of the organization, the leadership, which are, working on to have the results out, working on to have, better and optimum things going around. Turn at the top. I hope that helps. Shamshil, does that help? Yes, okay. Also, अगर मानो मैं आपने कभी ये सुना होगा work with the 5 smart peoples in a room, you'll be the 6th one. Work with 5 idiots, you'll be the 6th one. So if you have a good culture and governance, what will happen is that it will result and attract, develop, or retain capable individuals. So my experience is the same. I worked in MNCs, I worked in management consulting companies. That is a different league altogether. You are getting mentored by experts in the industry. You are getting trained by the right people. You are becoming the next possible the CEO of the company. They are mentoring you like that. They want it's not just the top ones we'll focus on. They want to focus on all the people. They want that we demonstrate good culture, good ethics, good values, and that's how they also deliver to the same way. Sounds good. Are we good with culture and governance? This was the brief detail of what culture and governance is. किसी को कोई doubt है, please feel free to ask. Don't hesitate at all. And sir, let me know one more thing. अगर आप आज क्लास खत्म करोगे, is it done? I would say no. हम बहुत अच्छे से points, bullets दिए जा रहे हैं. But what I want you to do is, this should be a practice that I want everyone to follow. At least once read the whole book. अब ऐसे एक दिन बैठोगे 100 पेज नहीं पढ़ पाओगे, but ये से आज हमने एक क्लास करी, we captured suppose 20 pages. I want you to read all those 20 pages in your weekday, be it like one go, partially, whatever suits you. But what your job is, you have to connect all those dots, connect each and every dot we discussed. You'll get to know यार ये इतने बड़े पेज का मतलब तो सिर्फ 5 लाइन का है. So I'm reducing the pages for my future preparation. मतलब the next time I'm revising, I don't have to go through the page. I'm not worried. I've made my own notes here and there. Though we have already done that highlighting for you, but yes, this will help you to make it more precise, make it more easy to understand. You can put in the examples that can help you. Does that sound good? Are we good? किसी को कोई doubt on culture and governance? मुझे बताओ. Let me know. All right, all clear. चलो आगे चलते हैं. सर रिस्क एंड परफॉर्मेंस. ओह मतलब एंटरप्राइज है तो रिस्क है तो उसको मैनेज करना है, एंड दिस ऑल विल लीड टू परफॉर्मेंस. आई वुड से रिस्क एंड परफॉर्मेंस इज इजियर टू से. रिस्क मैनेजमेंट
leading to performance. Okay, what are my steps around risk management? हमने पढ़ा था, first of all, will identify the risk. कहाँ रिस्क है, कहाँ रिस्क है, कहाँ रिस्क है, कहाँ रिस्क है. Okay, मुझे रिस्क मिल गए. My job is to identify the risk. I will identify the risk on all the levels of management, all the levels of business. I'll try to figure out क्या risk है. Is it risk based to one business objective, maybe multiple business objectives? That's my job to figure out. So first what I'll do is I'll identify the risk. Step 1. Identify the risk. Step 2. हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात करी हुई है. What was the step 2? I will assess the severity of the risk. यार कौन सा रिस्क कम है, कौन सा रिस्क ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? This will be understood by assessing the severity of the risk. अगर आपको मैं बताऊं, एक हीट मैप होता है. Just come on page 38 for the example. It shows, what is the likelihood on the x-axis and what is the potential impact on the y-axis. अगर likelihood ज़्यादा है और impact कम है, it has a lower heat map. But अगर likelihood भी ज़्यादा और impact भी ज़्यादा, it has a hotter heat map. So it is a darker tone of blue, whereas if it was remote and negligible, it was a lighter version of blue. So it's like having a heat map to figure out यार कि ये ज्यादा chances हैं, इसलिए उसका darker tone है. ज्यादा chances और ज्यादा impact. I am assessing the severity of the risk. ज्यादा chance, ज्यादा impact. कम chance, कम impact is the least possible severity that we can have. Look on page 38 for this diagram. You have likelihood on the x-axis, you have potential impact on the y-axis. I hope it is clear. ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आगे चलते हैं. The next job is to prioritize risk. इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है. आई एम नॉट श्योर किस स्टूडेंट ने पूछा था. somebody had asked और हमने बात करी थी. we'll just prioritize. यार इस रिस्क को डील ज्यादा करते हैं. let's keep it on a higher priority. इसमें कम severity है, इसको lower priority में कर दो. that's it. आगे चलते हैं. then we have risk responses. ये बहुत जरूरी है. इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. एमसीक्यू काफी चांसेस है, यू कैन एक्सपेक्ट. सर रिस्क रिस्पॉन्स मतलब, यार हमने ये बात करी थी. फर्स्ट विल आइडेंटिफाई द रिस्क, देन वी विल असेस द सिवियरिटी, प्रायोरिटाइज, और फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे. व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सेस टू द रिस्क. मैं क्या करने वाला हूं उस रिस्क के अगेंस्ट. व्हाट इज द रिस्पॉन्स आई हैव अगेंस्ट द रिस्क. What am I about to do for the risk? What is the response? There are broadly, can I erase if people don't have a problem, because I may need some space. Can I erase? ओके चलो इरेज कर दें. और अब हम करेंगे रिस्क रिस्पॉन्स के बारे में बात.
जो एक सब पार्ट था रिस्क रिस्पॉन्स, उसके बारे में बात करते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, मैंने सब इरेज कर दिया इसको लिखने के लिए, तो यस इट इज इंपॉर्टेंट। और पहला क्या था सर? एक्सेप्ट। हमने देखा यार ये जो रिस्क है ना, ये है ही है। इट इज फाइन ऑल्सो, वी आर एबल टू मैच इट, हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आर रिस्पॉन्स इज एक्सेप्ट द रिस्क। ठीक है, डील कर लेंगे जब आएगा, इतना है हमारी रिस्क एपेटाइट, कर लेंगे। एक आया अवॉइड। हमने देखा यार हमें ना दिक्कत आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा यार इस पे कैसे करें, और इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, इट कैन डैमेज आवर बिजनेस। हम क्या करते हैं, उस चीज को अवॉइड करते हैं। अवॉइड कैसे? सपोज आई हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई एम मैन्युफैक्चरिंग कार्स, बाइक्स, ट्रक्स। मुझे लगता है बाइक्स में ना कोई रिस्क फैक्टर है जो मैं नहीं डील कर सकता, विच इज अबव माई रिस्क एपेटाइट, और अगर मैं उसको करूंगा कंटिन्यू तो मेरे को लॉस हो सकता है। What I'll do is I'll avoid, maybe I'll seize my manufacturing unit. शायद लेबर स्ट्राइक्स चल रही थी, I seized the manufacturing unit. मैंने थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करने के लिए बंद ही कर दिया. So that's how I am not going on that. I'm not pursuing it so that I can avoid the factor of risk. Pursue. हमने ऊपर बात करी, I am not pursuing. अब मैं परस्यू कर रहा हूं। यार मैंने देखा यार रिस्क तो है, बट आई एम समवॉट लाइक हर्षद मेहता, वो वेब सीरीज वाला। आई वॉज लाइक रिस्क है तो इश्क है। आई सेड लेट इट बी, आई विल परस्यू द रिस्क, आई नो द वे आउट, आई विल फाइंड अ वे आउट, आई कैन मैनेज। सो आई परस्यू द रिस्क सो दैट आई कैन bring it down to the maximum level. I can reduce the risk to the maximum possible level. I may adopt, aggressive growth strategies. I may expand my business. I may have new products or services coming in. Item number 4. What I'll do is I will reduce the risk. Okay, मैं क्या करूँगा? I'll take actions to reduce the severity. अभी तक मैं क्या कर रहा था, या तो accept या reject या deal. अब मैं उसको reduce करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम करो यार, बहुत ज़्यादा है. Like it involves a myriad everyday business decision that reduces the risk and amount. मतलब मैं ऐसे business decisions लूंगा ताकि मैं अपने overall risk को reduce करता जाऊं. Oh, I got it. ठीक है. अरे यार मैं दिमाग लगाया. एक मीम आता है ना, when you use 100% of your brain, this is a genuine 100% use of brain. I said I am exposed to maybe some loss or damages. मेरे को litigations का डर लगता है कि शायद कोई product liability litigation आ जाए जिस कार को मैं manufacture कर रहा हूँ उसके against. So what I did is I took insurance. So what I did is I did a share or a transfer. So मैंने अपने रिस्क को शेयर कर लिया या पूरा ही भगा दिया, लो भाई इंश्योरेंस वालों तुम देख लो। या शायद जैसे ऑडिट करना है, मैं खुद नहीं करना चाहता था इंटरनल ऑडिट, मैंने आउटसोर्स कर दिया। अकाउंटिंग का काम कहीं और आउटसोर्स कर दिया, टैक्स प्रिपेयर का काम कहीं और आउटसोर्स कर दिया। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आउटसोर्सिंग माय बिजनेस, राइट? इज दैट मेकिंग सेंस? आर वी गुड गाइज? क्या हमें समझ आया what is accept as a response, what is avoid as a response, what is pursue, what is reduce and what is share? Share and transfer का एक और एग्जांपल, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल्स है यूएस डॉलर की और मैं इंडिया में बैठा हूँ। आई एम वरीड यार, शायद हो कि डॉलर वीक हो जाए, तो आई एम हेजिटेंट कि यार पैसे कम ना आए। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गेटिंग अ हेज, ताकि जो भी फॉरेक्स फ्लक्चुएशन आए, आई एम श्योर आई हैव गॉट इट शेयर्ड और आई हैव गॉट इट ट्रांसफर्ड। Puneet, if you remember, we mentioned that risk management is more than internal controls. मतलब of course internal controls शायद हम सेट करें, बट सिर्फ इंटरनल कंट्रोल से काम ना चले, हम ओवरऑल उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो जरूरी है। सो दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट।
Are we good? Are we understood? Puneet, are we good? Okay. What about others? क्या हम रिस्क रिस्पॉन्सेस से कंफर्टेबल हैं? What about Sachit, Santosh, Aparna, Yogesh? Okay, they are saying yes. Mitushi, Shamshil, Kamal. Are we good, guys? All right, looks good. We are going very well. आगे चलते हैं. Let's go on. Develop a risk portfolio view. इसमें हमने क्या बात करी है यार? हम क्या करेंगे अब? हमने, अगर आप देखो, हमने पहले आइडेंटिफाई रिस्क करा. We assessed the severity of the risk. क्या severity है? क्या impact आ रहा है? Then I prioritized. यार किसको पहले डील करूं, किसको बाद में करूं? Then I had a plan, which were my responses. Either I can accept, I can avoid, I can pursue, I can reduce, or I can share or transfer. अब ये सब कुछ हो गया. Now I am having a portfolio view of risk. मैं देख रहा हूं यार अब कैसे सब दिख रहा है. मैं ये तो देखूं कि कितना रिस्क था और आज के टाइम पे हम कहां खड़े हैं. ओह, आपका ये मतलब था. So there are examples like strategy view, entity objective view, business objective view. This is just a function to view आज के टाइम पे क्या status है bro. How are we doing today? ये है उसकी राम कथा. All right, sounds good. Any doubt in the whole process of having risk responses? Any doubt, guys? Let me know. ऑल गुड. आगे चलते हैं. अब आता है हमारा अलग कंपोनेंट विच इज कॉल्ड मॉनिटरिंग. अब हम करेंगे मॉनिटर कि भाई लोग क्या चल रहा है कि हम उसको मॉनिटर करें. आई कैन से दिस इन्वॉल्व्स रिव्यूज. दिस कैन हैव रिविजन. So you can have review, you can have revision. So that's all about monitoring. हम क्या करने वाले हैं? We will assess. यार ऐसा क्या चेंज आया है? Let's assess the business. Let's assess the substantial changes. Let's review the risk and performance. हम रिव्यू करेंगे रिस्क कितना है, परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, क्या क्या हो रहा है. एंड we'll also also pursue improvement in the ERM. यार how we can make it better. We'll also look in that direction. कैसे हम उसको रिवाइज करके और एक बेटर enterprise risk management बना सकते हैं. We should review what's going on. We should review how we can deal it, how we can manage it. Are we good, guys? Are we good? आगे चलते हैं. Next is communication of risk management. सर अभी तक हमने क्या कर लिया? हमने स्क्रैम इट अगर मैं लिखता हूं
हमने सी कर लिया, इसको काट दो, हमने आर कर लिया, हमने ए कर लिया, हमने मॉनिटर कर लिया। अब हम करेंगे कम्युनिकेशन, विच इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। चलो इसको भी टिक कर दो, तो एक ही रह जाएगा, एंटरप्राइज स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग, तो वो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो जी, लेट्स डू दिस। Now we are on communication. So we will have the information and communication. What are we doing about it? यार एक बात बताओ, मैं फंक्शंस लगा लूँ, मैं प्रोसेसेस लगा लूँ, मैं कंट्रोल्स लगा लूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँ, बट अगर मैं अपनी टीम को कम्युनिकेट नहीं करूँगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, हाउ कैन आई इंश्योर इट इज इफेक्टिव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? दैट्स रिक्वायर्ड। मुझे अपनी टीम को इन्वॉल्व करना है, आई हैव टू कीप देम अपडेटेड, ट्रेन्ड, अवेयर रखना है, ताकि वो उस सही तरीके से रिस्क को मैनेज कर पाए। It reports on risk, culture, and performance, how well we are communicating, holding quarterly analysis, meetings, huddle calls. This is all about communication. हम शायद memos बना के share करते हैं, summaries about it, giving a link for detailed understanding, giving a summary on an email. So that's all about, information and communication. This is very effective and very much required. हम इसमें strategically टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली अपना कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड कर सकते हैं। वी कैन होस्ट वेबिनार्स एट द कन्वीनियंस ऑफ आवर ज्योग्राफीज, वी कैन स्टिल होस्ट अ मीटिंग, स्टिल होस्ट अ कॉल एंड हैव अ गुड टाइम। कम्युनिकेट करो इफेक्टिवली, ऐसे ना करो सबको फ्लाई करके वहाँ भेजो, वो कहाँ टाइम खराब करें, वहाँ से यहाँ आए और यहाँ आके आधा अधूरा जो समझे वो सिखाएं। let us involve everyone through a webinar. Oh, that sounds good. Live telecast. Sounds good. Sounds nice. Any doubts so far, guys? Any doubts? Please let me know. Any doubts, guys? Any doubts so far? Let me know. Are we good? All good. All good. Clear? चलो आगे चलते हैं। सर अगला वो पार्ट है जिसने क्रैमिट को स्क्रैमिट बनाया, which is S, the enterprise strategy and objective setting. हम जब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे पहले, हमने ये बताया था इसमें कुछ स्टेप्स हैं और आई वुड से दिस इज द फ्लो ऑफ दिस होल प्रोसेस, राइट? सो लेट्स डू दैट। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी हैव enterprise strategy. So this was the S, Scrum. ये मेरा S है, don't get confused. हाँ अब ठीक है। तो we are having enterprise strategy and objective setting. हम अपनी एंटरप्राइज की एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसके बेसिस में हम ऑल्टरनेटिव्स को चेक करेंगे और फाइनली एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हम कैसे कैसे क्या करना चाहते हैं। I would say a hot question for MCQs, so at least be comfortable with the titles at least, right? ठीक है, तो पहला क्या है? I will analyze business context.
I will figure out what my business is about. What is the context of my business? क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे समझूं, वो सब काम, right? And then you'll have to define, यार इस चीज में ज्यादा रिस्क है, इस चीज में कम है. Let's define how much is okay for us. So we'll define a risk appetite. हम ये बताएंगे कि भाई लोग अपनी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कितने रिस्क को तो मैं कच्चा चबा सकता हूं. ओके, जस्ट अ स्लैंग, बट व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रिस्क फैक्टर फॉर मी, हाउ मच रिस्क इज ओके फॉर मी. ओके, मतलब यार जरूरी नहीं है हम 100% रिस्क को मिनिमाइज कर दें, बट वी आर ओके मैनेजिंग विद इट. सो व्हाट इज some acceptable level of risk to me? How much is my risk appetite? But I have to make sure I am having something within control. और इसमें कुछ pointers हैं, like we'll have to determine the risk appetite basis the expressions. Just giving understanding, very easy. I'll have to set what is the target. यार कहाँ तक हम जा सकते हैं? That's one. क्या range है? मतलब 0 से इतने तक है तो it's okay, my appetite allows. If it is above that, it is a risk factor which is above or beyond my appetite. I've set a ceiling. Ceiling बोले तो छत, मतलब what is the upper cap of my risk appetite, and I have my floor. What is the baseline, मतलब what is the floor level for my risk appetite? Does that sound good? Are we good till here? Can I go on to evaluation of strategies? I am asking. अच्छा, why I'm asking? मैं लिख सकता हूँ ना, तो क्या दिक्कत है, लिख देते हैं. That's cool. So what I'll do is I will evaluate alternative strategies. So now what I'll do is I will say, अच्छा ये ना फ्लोर अलग है तो इसको मैं अलग दे देता हूं. अब ठीक है. So I'll have to evaluate what are the alternative strategies. ये वो strategies हैं जिसकी वजह से मैं अपने business context या अपने risk appetite के आसपास रहूंगा, उससे ऊपर नहीं आऊंगा. So I have to evaluate what all are the alternate strategies that can be applied in my business. Okay, what can help me to figure out, to keep the enterprise strategy in such a way that I'm able to, meet my overall objective of the business. How can I manage my enterprise risk? Set an objective, set a strategy behind it that it helps me to align my enterprise business strategy with my enterprise risk strategy, and they overlap to each other. That's all about evaluating alternative strategies. So now once I have done all this, मैंने सब कर लिया. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फॉर्मुलेट कर सकता हूं. अरे सर, अब मैं ये बता सकता हूं कि हमें क्या करना चाहिए. I'll have a 4 item. I'll formulate. Now I'll formulate. मैंने क्या करा? सबसे पहले एनालाइज करा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, रिस्क एपेटाइट्स को देखा, इवैल्यूएट करा सब कुछ. फिर मैं अब सब कुछ कर लिया मैंने, तो मैं फॉर्मुलेट करूंगा. आई विल फॉर्मुलेट माय बिजनेस ऑब्जेक्टिव. आई लेट देम नो यार व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. विल फॉर्मुलेट दैट. विल लेट देम नो व्हाट इज आवर टारगेट. यार इतना अपना टारगेट है, हमें यहां तक पहुंचना है. दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द टारगेट. विल हैव अ टॉलरेंस लेवल. यार इससे नीचे ही रखना है, इसके ऊपर हुआ तो इश्यू हो सकता है. It is the sigma rule define can say that. It's like I am formulating on all the analysis. Now I'm formulating one.
आई थिंक सिग्मा में क्या होता था, DMAIC होता है ना, which is starting with define. It says define the problem and then we'll go for the solution. What here we are doing is we are first identifying, analyzing the context, then I'm understanding the risk appetite, I'm having an alternate evaluation कि alternative strategies क्या हैं, and then I'm taking the best one. So थोड़ा सा difference है. It is giving a definition to the problem. Here we are coming up with the objective. That's what we want, right? So slightly different. Are we good? Cool. चलो आगे चलते हैं. What about others? Okay. Shamshil says we are good. Santosh says we are good. Sir, all good. What about Puneet? What about Kamal? Joel? What about... नाम याद नहीं रहते मेरे को. Okay. What about Pooja? What about Yashid? Santosh? Mitushi? What about Aparna? Raj? मुझे एक दो क्लास लगते हैं फिर मेरे को नाम याद हो जाते हैं सारे. मैं बिना देखे पूछता रहता हूँ, तेरे को समझ आया? नहीं, क्यों नहीं आया? What about Sachin? What about Yashit? अरे what about Paras? अरे सर क्या पढ़ा रहे हो? वाह 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 ताज, वाह ताज, वाह, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया. पूरा दिन पढ़ा दो सर, मैं तो ऐसे मूड में आया हूँ. पढ़ाते जाओ, आज ही कर दो BC 1 2 3 खत्म. 2 सेशन में BC खत्म कर दो सर, मजा ही आ रहा है. ऐसे ही चलते रहो, बस पढ़ाते रहो. सत्संग बना दिया आपने इस क्लास को. वेरी नाइस. पुनीत से सही है, पुनीत भी कह रहे हैं हाँ यही करते हैं, मजा आएगा. Oh my. चलो, let's go on. Jokes apart. चलो, let's go on. Now what we are doing is we will go on and further with this. हमने जो major component था, जो major chunk था, which was component of ERM, वो कर लिया है. अब जो आगे है बहुत basic है, not heavily tested, neither requires a lot of time and effort. So we'll try to capture like 5 minutes. 3-4 मिनट एक में बात करेंगे, 3-4 एक मिनट में एक बात करेंगे, and we are done with it. Let's go on. Meanwhile, अगर कोई भी डाउट है in the whole chapter, please start asking. Don't hold it up. Actually, आपका डाउट बाकियों के लिए भी हेल्पफुल है. So it's helpful for everyone. So what we are doing is we are assessing the ERM. मतलब हम assessment कर रहे हैं कि यार द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर रही है whether the components and the principles relating to ERM are present and functioning. मतलब जो components हैं ERM के, क्या वो present हैं और क्या वो functioning हैं, क्या वो operational हैं. Okay, the components relating to the ERM are operating together in a integrated manner. ऐसा तो नहीं है कि एक कहीं चल रहा है और एक कहीं चल रहा है, नहीं. We are assessing the ERM that it is functional and operating. हम ये देख रहे हैं that they are working in a integrated manner. ऐसे तो चाहिए ना, हमें integrated तो चाहिए. ये थोड़ी ना कि एक फंक्शन है एक नहीं है, ऐसे नहीं. हमें चाहिए components, हमें साथ में चाहिए. The controls are necessary being put in place to give the effect relevant principles के लिए what is there and ensure that those controls are present and functioning. Oh, okay. Controls की बात भी है, but it's very important that it's a operational level and other levels as well. It's not just one. It's a lot more than you can think of. Okay. Okay. This is a very brief about assessing a ERM. Not a very fancy topic. कोई problem नहीं है. इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो assumptions थी वो सही हैं. We are assessing that our enterprise strategy and our business strategy for ERM are aligned, are making sense. वो साथ साथ है. ये तो नहीं है वो उल्टी सीधी हैं,
कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, स्ट्रैटेजी तो बनाई, टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, बट रिजल्ट नहीं आया। क्यों? हम प्रिपेयर कर रहे थे साइबर फ्रॉड का, और आ गया कोविड, तो हम तो तबाह हो गए। सो आवर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट वाज ऑल फोकस्ड ऑन साइबर फ्रॉड। हम ऑनलाइन मार्केटिंग में थे, बट हम भूल गए कि अगर कोविड आ गया तो उससे हमें क्या हिट हो सकते हैं। सो वी नीड टू हैव अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड द ऑब्जेक्टिव्स। आई होप वी आर गुड टिल हियर। Are we good? Okay, let's go on. Then we have looking into the future. यार एक बात बताओ, ERM is a function, effective function, strong function. ERM has components. It's not a department, it's not a function, it's way above. मतलब ये कहना ठीक है, ये function है, ये department है, but ये सिर्फ वहां तक नहीं है, it's way wide. So ERM at an overall level is a great tool to work on. It is a great concept to work on the business. It is great to have a effective control. It is great concept to have a effective improvement, a great concept to have a effective enterprise risk management. So what are the benefits of ERM? It is also futuristic. It helps us to look into the future. What are the examples here? It helps us to deal with proliferation of data. क्या किसी को पता है proliferation क्या होता है? Doesn't even know about it. What does it mean? किसी को पता है? एग्जाम्पल देता हूँ, आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, उसमें एक बंदा था अनुपम मित्तल, या अभी भी है. सो व्हाट ही डिड इज ही इन्वेस्टेड इन द वेबसाइट ऑफ शादी.com, जबकि नॉर्मल पंडित लोग एक रेडियस, मिनिमम रेडियस जो उनका होता था, वहां जाके रिश्ते दिखाते इन द सेंस ऑफ फोटोज. बट वेयर एज he came, he made it global, he made it big. So he understood that if we have new data coming in, we need to have enterprise risk management. Deal with proliferation of data means आगे जब शादी.com बड़ा होगा, we may not have only 100 or thousands of clients, we may have lakhs and lakhs of clients. So what's happening is we are having lakhs and lakhs of clients and lakhs of money coming in. So we need to have enterprise risk management to deal with this proliferation of data. इतना सारा डेटा आएगा, क्या पसंद है, क्या हाइट है, क्या सैलरी है, what are your likes, what are your dislikes, what is your demand, यार किस टाइप की लड़की चाहिए, किस टाइप का लड़का चाहिए. ओह अच्छा, ये सारी चीजें भी हैं. ओके नाइस. हमें ये पता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करता है. So what we are doing is we are leveraging artificial intelligence and automation. Example दो सर, ऐसे मजा नहीं आएगा. Okay, let's go on. आपको पता है पहले जब हम छोटे होते थे, या शायद हम नहीं, हमारे पेरेंट्स कस्टमर केयर पे कॉल करते थे, 15-15 मिनट लाइन पे लगे रहते थे, फिर वो कहते थे अरे सर ये नंबर गलत है, इस नंबर पे कॉल कर लो. सर आपकी प्रॉब्लम यहाँ नहीं सॉल्व होगी, एक ईमेल डालो. सर ये डिपार्टमेंट दूसरा है, रुको मैं ट्रांसफर करता हूँ. फिर उस डिपार्टमेंट में 15 मिनट का वेट. ओह अब क्या हुआ, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव ऑटोमेशन. हम कॉल करते हैं, देयर इज ऑटोमेशन, देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर देयर. They ask in a few words, tell us what your problem is. Suppose I'm calling for reward points on my credit card. I say reward points. They will transfer my call and I will bypass all those problems. I directly go there.
Maybe they'll have, you can also redeem your reward points from the app. I disconnected. It took me less than a minute. I was done. I'm going to the app and I redeemed. 2 minutes, काम खत्म. 15 मिनट और 15 मिनट, 30 minutes का काम 2 minutes में. Oh, we are leveraging artificial intelligence. The enterprise is able to, manage the risk of, false calls, risk that their server may fall down. क्योंकि इतना heavy call, they are diverting. आप apps को use करो, आप हमें emails कर लो, आप net banking use करो. That's what they are doing. They are managing their risk. It is getting efficient for us. We are making money. Time is money. Time बच रहा है, money बन रहा है. Nice. Okay, let's go on. Then the next one is managing the cost of risk management. पहले शायद हम रिस्क मैनेजमेंट में बहुत पैसा खर्च करते थे, but now overall enterprise risk management, we are being skeptical as well. We are not spending money like whatever the bill is paid because it's for enterprise risk management. No, we are managing that as well. We are figuring out यार same delivery अगर हम इस alternative से करते हैं आती है, so cost can be going down. So that is how we are managing the cost of risk management. Last but not the least, this is building a stronger organization. यार एक बात बताओ, सही में एक बात बताओ मुझे, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने आज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट करा, आपको क्या लगता है एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे? आपको क्या लगता है 15 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे? आपको क्या लगता है 1 साल में रिजल्ट आ जाएगा? आई कैन से दिखने लग जाएगा, बट इन रिजल्ट्स का आउटकम ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स आता है, ऐसे नहीं एक झटके से. एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स की पहली गाड़ी थी इंडिका. अगर आपने स्टोरी सुनी है टाटा मोटर्स की, दे वेंट अहेड at the tough times because it's tough for them to manage business. They were not from the automotive industry, at least from the retail car section. They were from the trucking industry and all that. They went to Ford, asked that, would you buy Tata Motors? It's not easy for us to manage, and it seems that you guys are good players in automobile industry, cars industry. They made fun of them and they mocked them and they sent them home. Whatever, Tata Motors worked out the risk management. They identified what can go wrong, what is the mitigation we can have, how we can monitor everything, what is the enterprise strategy, what is our objective. And a time came, Tata Motors grew, not just Indica, they grew overall, they became global. They acquired Land Rover and Jaguars. अगर आप टाटा मोटर्स की कार आज में जो आ रही है, like Safari, you look at Harrier, you look at Nexon, EV कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा, टाटा मोटर्स दे रहा है. That's very fascinating. Ford, जो कि यहाँ प्लेयर था, Ford shut the business and went off. Oh, Land Rover, Jaguar पहले Ford के पास थे, they purchased from them later. So that's how you are building a stronger organization. You are having electric vehicles. गिने चुने ब्रांड्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल देते हैं, और सबसे ज्यादा वैल्यू टाटा मोटर्स की है. द मार्केट शेयर ऑफ टाटा मोटर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मोर देन 50%. 50% से ज्यादा इनकी गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक में. दैट्स वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट बाय टाटा मोटर्स. व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर हैविंग एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंड द रिजल्ट्स आर रीपिंग आउट नॉट जस्ट इन अ डे. They are reaping out the benefits over the years. Oh, all right, sounds good. Let me know, folks, are we good with the chapter Enterprise Risk Management? We are done and dusted. What about Aparna, Joel, Shamshil, Mitushi, Pooja, Raj, Sachit, Swati, Yashit, Santosh, Yogesh,
Are we good, guys? Let me know. कोई भी डाउट, मतलब इतना सा भी डाउट है तो पूछो. Are we good till here? क्या हमें समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, क्या हमें समझ आ रहा है? Are you enjoying my dance along with this, studies? मजा आ रहा है सबको? शमशील कह रहे मुझे एम्बैरस मत करो, आपका डांस बहुत बेकार है, बट पढ़ा ठीक रहे हो. ओके, नोटेड. चलो, the first and the foremost priority is that you should not have any doubt. You are clear with it. शमशील कह रहे not like that, मेरा डांस भी बहुत बेकार है, don't worry. Oh, okay, my bro. चलो. Okay, I think we are almost at the mid of the class. Let's take a break. We have completed one chapter.